So we are discussing vitamins, vitamin C. Okay. So we have already seen lipid soluble vitamins. So in that we have seen the vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So all that part is already completed. Okay. So today we will directly move to the water soluble vitamins. So we have already seen lipid soluble vitamins, and remember lipid soluble vitamins, they have storage form of their vitamins in the body. So for lipid soluble vitamins, they are stored in the body, and that's how they can cause toxicity, and patient may develop a hypervitaminosis in case of only lipid soluble drug. But water soluble vitamins, so lipid soluble vitamin क्या होता है कि वो लिपिड में soluble होते हैं, and they can be easily esterified with the lipids, and that's why your body has a storage capacity of vitamins, and that's why they can result in the toxicity hypervitaminosis. But in case of water soluble vitamins, as the name indicates, they are water soluble. So as they are water soluble, they can easily excreted. Okay, they can easily excreted in the urine. Easily excreted in the urine. That's why toxicity to these vitamins develops very rarely. Okay, very rarely. Now, from the water soluble vitamins, first vitamin we are going to discuss, that is vitamin C. Vitamin C. Vitamin C, also known as ascorbic acid. And you should remember, vitamin C का structure जो है, it will look like a structure of sugar. So vitamin C known as a ascorbic acid, and it has a structure similar to sugars. Now it is a very important vitamin. Mostly the role of vitamin C is nothing but it acts as an antioxidant. Okay. Now it is a versatile vitamin. It is known as a versatile vitamin. So a single vitamin which can cure a lot of, which can cure a lot of diseases, including your cancer. So it is used to prevent the diseases where there is a generation of free radical. So it is a reducing agent. Vitamin C is a reducing agent, and also it acts as an antioxidant. So that's why it is known as a versatile vitamin. तो इसको versatile vitamin क्यों बोलते हैं? ये antioxidant होता है, and बहुत सारे disease में ये prophylaxis करते हैं. Even it increases the immunity. So that's why during the corona crisis you might have seen vitamin C. Physicians were prescribing the vitamin C tablet. Why? Because it increases the immunity of your body. So that's why it is known as a versatile vitamin, also known as an anti-scurvy vitamin. Also known as a anti-scurvy vitamin. Yes, scurvy. So due to deficiency of this vitamin C, due to deficiency of vitamin C, so you may develop scurvy. स्कर्वी नाम का डिसीज आपको हो सकता है अगर विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो गया तो. ओके. सो versatile vitamin and anti-scurvy vitamin. The structure of vitamin C will look like a monosaccharides. स्ट्रक्चर जो होता है विटामिन सी का वो किस तरीके से दिखता है? It will structure of vitamin C will resemble or will look like a monosaccharides. Now acidity of vitamin C is due to the enolic hydroxyl groups present in the structure of vitamin C. We are going to see the structure after this slide. And it is a strong reducing agent. Okay, it is a strong reducing agent. So that's why it acts as an antioxidant. That's why it acts as an antioxidant. Strong reducing agent है. That's why it acts as an antioxidant. And L-ascorbic acid and D-ascorbic acid, they are the isomers of each other. L-ascorbic acid and D-ascorbic acid, they are the isomers of each other. And remember, out of these, L-ascorbic acid is active. L-ascorbic acid is active. D-ascorbic acid is inactive. L मतलब क्या है ना? Levorotatory. D मतलब क्या है? Dextrorotatory. So levorotatory जो ascorbic acid होता है, that is active. Dextro is not active. Now what is the source of vitamin C? कहाँ से मिलता है vitamin C? So source is nothing but the citrus fruits. सिट्रस फ्रूट्स जैसे आपका संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, है ना. रिच सोर्स ऑफ दिस विटामिन सी इज नथिंग बट द आमला. आवळा जो असतो that is amla. So it has a Indian gooseberry. It is known as Indian gooseberry. Amla is also known as Indian gooseberry. उसका synonym है. So in this amla you have rich. So it is a rich source of vitamin C,
एस्कॉर्बिक एसिड बहुत सारा होता है उसमें. ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन द गुआवा, जो पेरू होता है, पेरू पेरू में भी ये पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, गुआवा. ओके. देन ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज, टोमेटो जो है आपका, देन पोटैटो जो है आपका, सो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन सी. ओके. सो विटामिन सी इसमें होता है, बट मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है. बहुत सारे विटामिन मिल्क में होते हैं, दूध में, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है. क्यों? अगर विटामिन सी अगर मिल्क में रहेगा तो मिल्क फट जाएगा, बिकॉज इट इज एसिडिक, राइट. दैट्स व्हाई विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट इन द मिल्क. नाउ व्हाट इज द नॉर्मल डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस? आरडीए मतलब क्या? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब डेली कितना लगता है आपको? सो 60 to 70 milligram per day. You require 60 to 70 milligram per day विटामिन सी. एडिशनल इंटेक विल इंक्रीज इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन. प्रेग्नेंट वुमन में हर एक विटामिन का इंटेक प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है. सो प्रेग्नेंट वुमन को विटामिन का सप्लीमेंट चालू रहता है, बिकॉज इंटेक इज इंक्रीज इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन. नाउ बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन सी. बायोकेमिकल फंक्शन क्या है इसके? व्हाई दिस विटामिन is important? Biochemical function. It is not synthesized in the body. It is not biosynthesized. यहाँ पे bio है. It is not biosynthesized in the human and other animals like pigs and bat. Okay? It is not biosynthesized. It is not made in the humans, pigs, bats due to deficiency of one enzyme. So humans has a deficiency of enzyme. This is known as a L-gluconolactone oxidase. ये एंजाइम ह्यूमंस में नहीं होता, बैट्स में नहीं होता, पिग्स में नहीं होता, बाकी एनिमल्स में होता है. फ्यू एनिमल्स कैन सिंथेसाइज विटामिन सी, बट ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज बिकॉज इन ह्यूमंस दिस enzyme is not there. L gluconolactone oxidase. There is a lack of this enzyme L gluconolactone oxidase. This enzyme is very important for conversion of glucose into L ascorbic acid. So that's why L ascorbic acid has a structure of glucose similar to glucose. That's why structure of glucose is exactly looking like a L ascorbic acid. उसका reason ही वही है, because this enzyme convert glucose molecule into L ascorbic acid by the enzyme required is nothing but the L gluconolactone oxidase. So this enzyme is not there in the humans as well as okay animals like pigs and bats and batman. इसमें ये नहीं होता है. That's why it has to be supplemented from diet. तो ये विटामिन बायोसिंथेसिस नहीं होता है ना. जैसे जीआईटी में कौन सा विटामिन सिंथेसिस होता है? विटामिन के, है ना. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द जीआईटी. विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया. ओके. देन इन द बॉडी आल्सो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय bacteria in the GIT flora. Vitamin D under the skin is synthesized, you know that. Now what is the function of, what are the functions of this vitamin C? Vitamin C is required for the collagen formation. जो कोलेजन होता है, कोलेजन टिश्यू वो आपका बोन्स के ऊपर रहता है, टेंडन्स, मसल. सो कोलेजन इज दे आर मेड ऑफ कोलेजन. सो कोलेजन फॉर्मेशन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन. Then it is required for tyrosine metabolism, folic acid metabolism, and peptide hormone synthesis. Also responsible for the corticosteroid hormone synthesis. Okay. Then increase in the synthesis of increase in the synthesis of immunoglobulin. Vitamin C is involved in the synthesis of vitamin C is involved in the increase in the synthesis of immunoglobulin. That's why it has an important role in the immunity. Immunity बढ़ाता है ये. It is important for prevention action on the risk of cataract formation. So eyes में cataract बनता है, so it is required to prevent the cataract formation. Vitamin C has an important biological role. So collagen formation, right? Tyrosine metabolism, folic acid metabolism, peptide hormone synthesis, corticosteroid synthesis, increase in the immunoglobulin synthesis, prevention of risk of cataract formation in the humans. It is an antioxidant. Okay? Because of this action, it is anti-cancer also, used in the cataract, and it also prevents the coronary heart disease. So it is a versatile vitamin. तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो versatile होता है उसका. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? You can see the structure of vitamin C, L ascorbic acid. So structure will exactly look like your glucose structure. अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, अल्फा डी ग्लूकोज वैसा ही है, बीटा डी ग्लूकोज के वजह से. So L ascorbic acid is active
D ascorbic acid is inactive. Okay. Now metabolism of ascorbic acid. So L ascorbic acid, metabolism of ascorbic acid. So after the absorption, L ascorbic acid is okay converted dehydrated into, there is a dehydration of this ascorbic acid to form a dehydroascorbic acid, and lastly oxalic acid is the product. So that's all. It is metabolized in the body. Deficiency disease and toxicity of vitamin C. So deficiency results in the scurvy disease. Question important है. बाकी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में आता है. एंटी स्कर्वी विटामिन बोलते हैं ना, इसलिए deficiency result in the scurvy. Spongy and sore gums है ना. स्पंज जैसे आपका गम दिखेगा, एंड सोअर गम मतलब कभी भी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है. सोअर गम, लूज टीथ, anemia, swollen joint because of the insufficient synthesis of your collagen, fragile blood vessel, decreased immunocompetence, immunity कम हो जाएगा, delayed wound healing है ना, आपका जख्म ठीक नहीं होगा जल्दी, decrease in the function of adrenal cortex, then hemorrhage, osteoporosis because of the impairment of synthesis of collagen, and also it is having antioxidant property. So these are the deficiency symptoms. Okay, deficiency होगा तो क्या होगा, scurvy, okay, spongy और sore gums, loose teeth, anemia है ना, swollen joints, fragile blood vessel है ना, immunity कम हो जाएगा, decreased immunity, then decrease in the function of adrenal cortex, cortex का function कम होगा because it is responsible for the synthesis of corticosteroids है ना, it increases the synthesis of corticosteroids, that's why hemorrhage होगा. ओके, osteoporosis में तो क्या, जो आपका जो हड्डी है वो कमजोर हो जाएगा. Osteoporosis means decrease in the bone density, calcium density because of the impairment of synthesis of collagen and its antioxidant property. Vitamin C. So this is a vitamin C which belongs to water soluble but non B complex. जो विटामिन सी देखा है आपने वो वाटर soluble है लेकिन non B complex है. So we have seen lipid soluble vitamins or fat soluble vitamins or carotenoids. After that we have seen the vitamin C, which is a non B complex vitamin, non B complex but water soluble, you know, non B complex water soluble vitamin. Now next is nothing but the B complex vitamins, you know, B complex. Okay, B complex. First vitamin is nothing but the vitamin B1. B1 को क्या बोलते हैं भाई? B1 is known as thiamine. So vitamin B1 is known as thiamine. It is also known as anti-beriberi factor or anti-neuritic vitamin. Anti-neuritic vitamin. So anti-beriberi, anti-neuritic. विटामिन डी जो है दैट इज नोन एज एंटी रिचियाटिक फैक्टर, कि वो देखा है आपने कल, बिकॉज विटामिन डी का डेफिशिएंसी दैट लीड्स टू रिकेट्स इन द चिल्ड्रन एंड ओस्टियोमलेसिया इन द adults. That is what known as एंटी है ना रिचियाटिक विटामिन. विटामिन डी सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं उसको. नाउ इन द केमिस्ट्री ऑफ दिस विटामिन, ये केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन में कौन सा रिंग है. सो इन दिस विटामिन pyrimidine ring and thiazole ring. Here two rings are there, pyrimidine ring and thiazole ring. They are held together by methylene bridge. Pyrimidine ring and thiazole ring. It is only natural compound containing thiazole ring. ये विटामिन B1 ही only natural compound है which has a thiazole ring naturally. Okay. So इसका structure you can see over here. So you can see over here pyrimidine ring. This is a pyrimidine ring. This one is a thiazole you know, 1,3 nitrogen, 1 sulfur, 3 nitrogen. So it has a substituted pyrimidine ring, then substituted thiazole ring. So thiamine is converted into it main role in the body is nothing but it acts as a coenzyme, thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate is the coenzyme which is responsible for the metabolism. Okay, it is a cofactor for different enzymes. cofactor होता है. So important है थायमिन इसमें क्या है, pyrimidine ring प्लस thiazole ring. pyrimidine ring ये वाला है, thiazole ring ये वाला है, and they are held together by methylene bridge. यहाँ पे CH3 है, तो pyrimidine, thiazole, methylene bridge. Now it's coenzyme, उसके ऊपर phosphate अटैच होता है ना, phosphate, तो coenzyme बनता है thiamine pyrophosphate. ये coenzyme responsible है different. It is a coenzyme
for different enzymes. Recommended daily allowance, recommended daily allowance 1 to 1.5 milligram per day, that is required. एक से लेके 1.5 milligram per day. It is increased marginally in the pregnant women and children. बच्चों में और pregnant ladies में इनका increase करता है, increase होता है. Now, what is the source of this vitamin B1? तो ये vitamin B1 का source क्या है? Cereals, pulses, cereals, pulses, nuts, जो भी आपका कैशू नट है ना, जो आपका जो खाते हो आप, है ना, कैशू नट, है ना, वालनट, उसके बाद में आपका जो भी ये खाते हो क्या, बादाम वगैरह, है ना, सो आलमंड, कैशू नट, ओके, इन दैट यू आर गोइंग टू हैव दिस विटामिन. सीरियल्स जो धान्य होते हैं, मतलब ये अपना जवार, बाजरी, एक्सेट्रा, इसमें मिलता है. पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल, है ना, आप खाते हो अरहर की दाल, तूर की दाल, है ना, बेसन की दाल. सो इन दैट, इन डिफरेंट पल्सेस, ऑयल सीड्स, है ना, नट एंड ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट में भी होता है. सो जब आप लेते हो ना ब्रेड वगैरह, ब्रेड या फिर आपका टोस्ट वगैरह, सो उसमें एक येलो कलर का होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थायमिन. So yeast will ferment glucose. It will ferment and produce a thymine. Now polishing of rice removes 80% of vitamin. This is vitamin B1. तो जब राइस होता है, राइस का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको पॉलिश करके अपन राइस खाते हैं. आजकल आप पॉलिश राइस खा रहे हो. बिकॉज ऑफ दैट there is a loss of vitamin. So vitamin B1 is lost in the polishing. That's why nowadays thymine rich vitamin variety, thymine rich rice varieties, they are under the investigation. तो थायमिन मतलब जेनेटिकली थायमिन का रिच राइस बना रहा है. गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जैसा गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए लाया है. नाइपर के लिए क्वेश्चन आ चुका है तो इन द गोल्डन राइस इज विटामिन ए. विटामिन ए उसमें आ जाता है गोल्डन राइस में. नॉर्मली राइस में नहीं होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन दे फाउंड. बाद में वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके राइस में ही विटामिन प्रोडक्शन कर दिया. ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनिमल फूड लाइक पोर्क, लिवर, किडनी, मिल्क, है ना. अगर नॉन वेज के शौकीन है तो इसमें भी विटामिन ए, सॉरी विटामिन B1 मिल जाएगा आपको. विटामिन B1 इज नोन एज थायमिन, एंटीबैक्टीरियल विटामिन, एंटी न्यूरोटिक विटामिन. बायोकेमिकल फंक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द रोल इन द बॉडी? So it is a very important coenzyme. It gives very important coenzyme known as thymine pyrophosphate. Thymine pyrophosphate. So now it is a coenzyme for variety of carbohydrate metabolic reactions, mostly associated with the carbohydrate metabolism. है ना, आप देखो glycolysis में TPP है, thymine pyrophosphate. For pyruvate dehydrogenase, for example, for pyruvate dehydrogenase, important है ये. Then alpha ketochlorate dehydrogenase, transcriptolase, and branch chain alpha keto acid dehydrogenase. इस सब के लिए एंजाइम लगता है टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट. सबके लिए, है ना, इट इज अ कोएंजाइम फॉर एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द कार्बोहाइड्रेट, है ना, जैसे पायरुवेट. और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, तो मैं आपको बाद में लूंगा, कल जब लेंगे इसका विटामिन का, तो उसमें पूरा विटामिन देयर कोफैक्टर्स एंजाइम्स, ऐसे एक चार्ट बना के मैं आपको कल भी वो प्रेजेंट करूंगा. तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटो, all these example, all these enzymes, they are enzymes present in the Krebs cycle. जो Krebs cycle होता है उसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, सॉरी ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, अल्फा कीटोक्लोराइड डिहाइड्रोजनेज आपका Krebs cycle, ट्रांसक्रिप्टोलेज, ब्रांच इन अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज. So thymine pyrophosphate is a coenzyme which plays a very important role in the transmission of nerve impulse. इसका रोल है कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसका रोल है. अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा आपका? सो ऑब्वियसली यू विल सफर फ्रॉम न्यूरोसिस. सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे. थायमिन एंटागोनिस्ट कौन है? सो इसका पायरीथायमिन एंड ऑक्सीथायमिन, दे आर नोन एज थायमिन एंटागोनिस्ट. पायरीथायमिन, ऑक्सीथायमिन ले लिया तो थायमिन का, दे आर थायमिन एंटागोनिस्ट. दैट्स व्हाई थायमिन का डेफिशिएंसी आ जाएगा आपको, इसमें नर्व में प्रॉब्लम आएगा. Are you getting or not? Deficiency of thymine results in known as a beriberi condition, known as a beriberi. So what are the symptoms of thymine deficiency? So early symptoms में आपको आएगा loss of appetite, भूख नहीं लगेगा आपको, weakness आएगा, constipation, nausea, mental depression, in peripheral neuropathy and irritability.
These are the primary symptoms of vitamin B1 deficiency. बेरी में दो टाइप होता है, ड्राई बेरी, वीक बेरी. नमनेस इन द लेग्स, आपके जो लेग है वो पूरा सुन पड़ जाएंगे. नमनेस इन द लेग्स. कंप्लेंट ऑफ पिन एंड निडल सेंसेशन, आपके पैर में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई पिन चुभ रहा है. Elevated pyruvate in a urine, that is the symptoms. There are two type of beriberi, dry beriberi and wet beriberi, and another type is also there, neurological beriberi, etc. Wet beriberi, also known as a cardiovascular beriberi. इसके symptoms वगैरह important नहीं है. If you want to read, you can read from books. Then dry beriberi. Dry beriberi is known as a neurological beriberi. Question आता है, which beriberi is known as a cardiovascular beriberi? Which one is a neurological? Then Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff syndrome, also known as cerebral beriberi. Mostly it is found in the alcoholic patients. जो chronic alcohol लेते हैं, जो बेवड़े वाले लोग होते हैं, बेवड़े है ना, हमारे इधर उसको होते हैं 90 पंटर. तो जो 90 पंटर होते हैं, जो बेवड़े लोग होते हैं, उनमें क्या है कि ड्यू टू कंटिन्यूस intake of alcohol, so the mechanism responsible for the absorption of vitamins, okay? Now that is the decreases, that is decreased or it is lost. Due to that, the alcoholic develop the vitamin deficiency, particularly thiamine, and उसका न्यूरोपैथी होता है, उसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या फिर उसका दिमाग भी सिंक होता है. सो इट्स ब्रेन आल्सो सिंक्स. वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम, तो याद रखना है इसका डेफिशिएंसी डिसीज, वर्निके-कोर्साकॉफ सिंड्रोम एंड बेरी. और रिंग प्रेजेंट कौन सा है? pyrimidine ring plus thiazole ring held by methylene bridge, and very important TPP. ये इसका रोल क्या है? TPP, thiamine pyrophosphate, is a coenzyme for the metabolism of carbohydrate. TPP. Next one is a riboflavin. Next one is a vitamin B2. B2 is known as a riboflavin. Okay. So flavin, riboflavin. So इसमें रिंग कौन सा होता है? Isoalloxane ring. Isoalloxane ring. This ring is known as the isoalloxane ring, and it is connected with the one sugar known as a ribitol. यहाँ पे एक sugar भी होता है ribitol. पहले तो ring isoalloxane ring, बाद में sugar होता है ribitol. As you can see over here, this is known as the isoalloxane ring. Question आ चुका है. So which ring is present in the vitamin B2? That is the riboflavin. Isoalloxane ring. Isoalloxane ring, important, isoalloxane ring, and this sugar is known as a ribitol. Now again it will produce a one coenzyme which is very important, known as a flavin adenine mononucleotide and flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine mononucleotide and flavin adenine dinucleotide. So flavin mononucleotide. So in the flavin mononucleotide, riboflavin plus phosphate, okay, flavin mononucleotide, and in the flavin adenine diphosphate, so there are two phosphate plus adenine, phosphate plus adenine. So these are the its coenzymes. Now vitamin B2 is known as a riboflavin. It has a 3 heterocyclic ring. तीन रिंग कौन से? 3 heterocyclic ring structure, है ना. So 6,7 dimethyl isoalloxane ring, which is attached to a D-ribitol. D-ribitol है sugar. Okay? It is a heat stable vitamin but light sensitive. Heat stable होता है but light sensitive, है ना. बाकी जो most of the B complex vitamins है, they are not a heat stable, light sensitive. इसके ऊपर light अगर गिर गया है तो उसका photo itching होता है, photo metabolism होता है. So that's why this riboflavin is always stored in the amber color bottle. Vitamins का वही है, amber color bottle में सप्लाई करना है. Riboflavin is converted into lumiflavin. Riboflavin is converted into lumiflavin, which exhibit a yellow fluorescence. Now lactoflavin. So it is available in the milk. When riboflavin from milk is known as lactoflavin. Hepatoflavin, it was isolated from the liver. Oflavin from the eggs. These are the vitamins. Now recommended diet daily allows कितना है? 1.2 to 1.7 milligram daily. So it will increase in the pregnant woman also. ये तो हर एक में आता है. Source क्या है? It is found in the milk product, also found in the eggs, meat, liver and kidney.
रोल क्या है उसका? मोस्टली इट इज अ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड which participate in the many oxidation reduction reaction. So mainly in the redox reaction, oxidation reduction reaction for the energy production. Enzyme, different enzyme that uses the flavin adenine mononucleotide or flavin adenine dinucleotide are known as a flavoprotein, and metal containing flavoprotein are known as a metalloflavoprotein. Metalloflavoproteins. ये coenzyme है flavin adenine dinucleotide, flavin adenine mononucleotide. It is a cofactor for this enzyme. Cofactor of this enzyme is very important for carbohydrate, lipid, protein and purine metabolism. इसके मेटाबॉलिज्म में आपको ये को फैक्टर कौन से सेपरेटली देखने वाली, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सो विल सेपरेटली सी को फैक्टर्स. नाउ डिफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन B2 रिजल्ट इन द चिलोसिस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. चिलोसिस मतलब मुंह आना आपका ना, आपको मुंह में छाले होना. सो मोस्ट कॉमन डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 riboflavin, that is nothing but the चिलोसिस. चिलोसिस फिशर एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, आपकी लिप्स ब्रेक हो जाएगी. Glossitis, tongue and stung will become purplish, and dermatitis होगा. So ulcers in the mouth, that is known as cirrhosis. Ulcers in the mouth, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Now assay of enzyme, when enzyme is there, so determination of level of that enzyme known as glutathione reductase in the RBC. RBC में glutathione reductase नाम का एंजाइम होता है, उसका ऐसे किया, उसका लेवल चेक किया, तो is useful in the assessment of your riboflavin deficiency. तो अगर उसका लेवल कम हो गया तो राइबोफ्लेविन का डेफिशिएंसी है. galactoflavin is also there in a is a anti metabolite for riboflavin. galactoflavin is anti metabolite for riboflavin. So riboflavin आया समझ में आपको? Are you getting or not? riboflavin विटामिन B2 रिंग याद रखना है ना, 6,7 dimethyl isohaloxane ring attached with the D-ribitol. You can see the structure over here again. तो 6,7 dimethyl 9 रिबिटिल isohaloxane known as a riboflavin और विटामिन B2. तो रिंग A, B and C. तो रिंग A जो है ना वो बेंजीन रिंग है, पिरिमिडिन नहीं है, वो बेंजीन रिंग है. रिंग है ना, यहाँ पे जो दिखा है रिंग A जैसे बेंजीन रिंग. लेकिन बुक्स में भी गलती होता है, ये इतना बड़ा बुक है लेकिन उसमें भी गलती है. रिंग B इज नोन एज अ एजिन रिंग. एजिन मतलब क्यों? यहाँ पे एक नाइट्रोजन है 9 पोजीशन पे और यहाँ पे एक नाइट्रोजन. सो एजिन रिंग. रिंग सी इज नोन एज बेंजीन. रिंग सी इज नोन एज पिरिमिडिन रिंग. रिंग सी इज नोन एज पिरिमिडिन रिंग. पिरिमिडिन रिंग हो गए, उन्होंने देखा है स्ट्रक्चर अलग है. 6,7 डाइमेथाइल एलोक्सेन दैट इज नोन एज पिरिमिडिन प्लस ये जो रिंग है पूरा उसको बोलते हैं आइसोएलोक्सेन. देन ओके राइबोफ्लेविन when light is okay, when riboflavin exposed to the light, riboflavin को अगर लाइट से एक्सपोज किया so there is hydrolysis हुआ. so ribitol sugar बाद में आएगा, so it will remove the ribitol sugar and riboflavin is converted to lumichrome in the acid and neutral solution, and in the alkaline solution lumiflavin, yellow pigment and soluble in the chloroform. lumiflavin. इसके एंजाइम्स कितने हैं एक बार यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, इसको अपने फिर से लेने वाले हैं. सिलेक्टेड एग्जांपल्स ऑफ एपीडी एंड एफएम. फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट along with the respective reaction. So APD, flavin adenine dinucleotide, it is a coenzyme responsible for these enzymes. It is a coenzyme for these enzymes. पहला होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसमें पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स दैट इज APD डिपेंडेंट है ना, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोई. पायरुवेट डीहाइड्रोजन लैक्टिक एसिड बनता है ना वहाँ पे लास्ट में, पायरुवेट टू एसिटिल कोई दैट इज कन्वर्टेड इनक्रीज the enzyme pyruvate dehydrogenase complex which is dependent on the APD. APD उसके लिए coenzyme है, याद रखना है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है लास्ट. देन अल्फा कीटोग्लूटाराइड जो होता है आपके क्रेब्स साइकिल में, अल्फा कीटोग्लूटाराइड डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. सो अगेन दिस इज अ कोएंजाइम APD. APD मतलब क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम. जो ये स्टेप होता है अल्फा कीटोग्लूटाराइड डीहाइड्रोजनेज, वो क्या करता है? It will convert alpha ketoglutarate to succinyl CoA. Now succinate dehydrogenase, third enzyme, succinate dehydrogenase, which is also dependent on the APD. Succinate dehydrogenase.
ये क्या करेगा, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है. इफ यू रिमेंबर द क्रेब्स साइकिल, you can correlate easily. So then in the lipid metabolism, acyl CoA dehydrogenase का एंजाइम होता है beta oxidation of fatty acid. We have seen acyl CoA dehydrogenase. So this enzyme also require FAD as a cofactor. So acyl CoA is converted to alpha beta unsaturated acyl CoA, alpha beta unsaturated acyl CoA. और protein metabolism में भी ये इसका रोल है. In case of protein metabolism, so glycine oxidase, metabolism of glycine, so that is dependent on the flavin adenine dinucleotide. Glycine का कन्वर्ट होता है येलो एक्सेलेट तो सामने डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, उसमें को भी लगता है डी अमीनो एसिड कन्वर्ट टू अल्फा कीटो एसिड. प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी xanthine oxidase एंजाइम जो होता है, that is APD dependent. So xanthine is converted to uric acid and flavin mononucleotide dependent reaction कौन सी, yellow amino acid oxidase. Yellow amino acid is converted to alpha keto acid. Dihydrolipoyl dehydrogenase complex also requires APD. APD important है. APD, this enzyme is very important in the catalyzation of reaction. It is a cofactor. It is a cofactor for different enzymes responsible for the carbohydrate metabolism, lipid metabolism, amino acid metabolism, then purine metabolism. ये याद रखना है इसको. Next one is nothing but the vitamins. Okay, next one is nothing but the vitamin B3. B3 is known as a niacin. Niacin also known as nicotinic acid. इसका एक विटामर भी होता है. नियासिन का विटामर कौन सा है, निकोटिनामाइड. So nicotinic acid and nicotinamide, they are the vitamins of each other. Known as vitamin B3. It is also known as anti-pellagra preventive. Okay, anti-pellagra factor, pellagra preventive factor, pellagra preventive factor. Importantly, pellagra preventive factor of Goldberg. Pellagra preventive factor of Goldberg. Pellagra preventive factor of Goldberg. Now इसका स्ट्रक्चर कैसा है? It has a pyrimidine 3 carboxylic acid. Okay, pyrimidine 3 carboxylic acid. pyrimidine रिंग देखो है ना, 1 नाइट्रोजन, ये 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, ये कार्बन को 3 बोलने का, इसको 4, इसको 5. So pyridine 3 carboxylic acid and its amide है ना, COONH. amide जो है ना उसको बोलेंगे अपन niacinamide. Okay, nicotinamide. Okay, then niacinamide is nothing but the amide derivative or nicotinamide. Niacinamide or nicotinamide is a nothing but the amide derivative of niacin, vitamin B3. Recommended daily allowance होता है 20 मिलीग्राम, और ये इंक्रीज होता है कहाँ पे, प्रेगनेंसी में. सोर्सेज क्या है इसका, लिवर एंड ईस्ट. नाउ 60 milligram of tryptophan is equivalent to 1 milligram of niacin for synthesis of niacin coenzymes. 60 milligram tryptophan is equivalent to 1 milligram of niacin for synthesis of niacin coenzymes. Now biochemical functions of this niacin, इसके लिए important है बॉडी में. अगेन वेरियस कोएंजाइम्स. क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा आया था, मैच द फॉलोइंग कोएंजाइम्स है ना विथ रिस्पेक्ट टू विटामिन डेराइव्ड विटामिन, और मैच द फॉलोइंग कोएंजाइम्स एंड देयर रिएक्शन कैटलाइज. ऐसा क्वेश्चन आ चुके 2 बार. बायोकेमिकल फंक्शन क्या है इसका, सो इट इज आल्सो अ कोएंजाइम फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन. ओके, various coenzymes of nicotinamide adenine dinucleotide NAD, nicotinamide adenine dinucleotide and NADPH, that is a nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, nicotinamide adenine dinucleotide and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. They are the coenzymes synthesized from essential amino acids, nicotinamide, niacin and tryptophan. ये 3 लगते हैं, nicotinamide, niacin. It is important in a biochemical function is nothing but the oxidation reaction. important होता है ये है ना. तो जो coenzyme है, coenzyme obtained from niacin, important for biochemical function of oxidation and reduction reaction. niacin inhibit the lipolysis. niacin क्या करता है, inhibit करता है lipolysis. So in the hypolipidemic drug we have seen the nicotinamide, we have seen the action of nicotinamide. nicotinamide क्या करता है, nicotinamide inhibit the lipolysis, and because of the inhibition of lipolysis तो breakdown of lipids नहीं होगा, breakdown नहीं होगा तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रिलीज नहीं होगा. that's why decreases the cholesterol level, decreases the triglyceride synthesis in the liver,
it will decrease the LDL, low density lipoprotein, and very low density lipoprotein. Therefore, used in the treatment of hyperlipoproteinemia type 2B. So, what is a nicotinamide? Pyridine 3 carboxylic acid amide. ये pyridine होता है N, यहाँ पे CONH, NH2, CONH2, OH is our NH2 होता है. Known as a nicotinamide. Pyridine 3 carboxylic, niacin मतलब simply nicotinic acid. Pyridine 3 carboxylic acid. Now different enzymes, different examples of NAD, NADPH, okay, dependent enzymes. तो ये जो दो फैक्टर है NADH, NADPH, किसके लिए लगते हैं? NAD किसके लिए लगेगा? NADH किसके लिए लगेगा? So NAD dependent different enzyme. पहले अपन देखें NAD dependent different enzymes. So NAD dependent different enzymes. So in the carbohydrate metabolism, you have glycerylate 3-phosphate dehydrogenase enzyme, which is dependent on NAD. ये क्या है? ये सब cofactors है ना? They are the energy releasing cofactor. That's why the vitamins, these vitamins, they are classified as B complex, energy releasing, then hematopoietic, then others. तो उसका basis है वही है. Because some B complex enzymes, they are the cofactor required for the various metabolic enzymes to produce energy, ATP बनाने के. So in the carbohydrate metabolism, glyceride 3-phosphate dehydrogenase enzyme is there, which convert glyceride 3-phosphate into 1,3-phosphoglycerate. So that enzyme is NAD dependent. Nicotinamide adenine dinucleotide. Nicotinamide adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADH. Lactate dehydrogenase enzyme. So convert pyruvate into lactate, which is also NAD dependent. Pyruvate dehydrogenase complex, so also NAD dependent. Pyruvate to acetyl CoA. Alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. Alpha ketoglutarate to succinic acid बनेगा. So all these are the vitamin, okay, vitamin और nicotinic acid उसके ऊपर ये enzyme है. So all these enzyme requires nicotinic acid for cofactor. Now lipid metabolism में जो enzymes होते हैं like beta hydroxy acyl CoA dehydrogenase, ना, beta hydroxy acyl CoA dehydrogenase will convert beta hydroxy acyl CoA to keto acyl CoA. उसके लिए जो एंजाइम है ये बीटा हाइड्रोक्सी असल को डीहाइड्रोजनेस, NAD प्लस डिपेंडेंट है. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजनेस, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट करता है अगेन यूजिंग इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म. NAD अल्कोहल डीहाइड्रोजनेस के लिए अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एसिटाइलेट, इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू एसिटाइलेट, methanol is converted to formaldehyde, that is also NAD dependent. Now in case of protein metabolism में क्या है? Branch chain keto acid dehydrogenase. So that enzyme also requires NAD as a cofactor. Keto acid से क्या बनता है? Corresponding acyl CoA thioesters. Keto branch chain amino acid कौन सा होता है? Leucine है ना, lysine and valine. Tyramine dehydrogenase also require NAD as a cofactor, NADH. Tyramine to parahydroxyphenyl acetate. Then next आता है आपका NAD और NADP डिपेंडेंट, ये दोनों में कोई भी चलता है इनको. So glutamate dehydrogenase convert glutamate into alpha ketoglutarate plus ammonia. ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामेट जो होता है अमोनो एसिड, उसका मेटाबॉलिज्म में भी रहता है NAD plus NADPH. Glutamate dehydrogenase convert glutamate into alpha ketoglutarate and ammonia. Isocitrate dehydrogenase, ये एंजाइम का आप पता है क्रेब्स साइकिल में also requires this NAD. Conversion of isocitrate to oxalosuccinate. NADPH dependent. NADPH मतलब क्या? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. So glucose 6-phosphate dehydrogenase, which is dependent on NADPH. NADP plus glucose 6-phosphate is converted to 6-phosphogluconolactone. मैलिक एंजाइम, ओके, मैलिक एंजाइम भी लगता है, मैलेट को पायरुवेट कन्वर्जन करना है. सो मैलिक एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड टू पायरुवेट, व्हिच इज आल्सो NADP डिपेंडेंट और NADPH डिपेंडेंट. NADPH, so 3 keto acyl reductase is there, HMG CoA reductase is there, squalene epoxidase is there, cholesterol 7 alpha hydroxylase is there, phenylalanine hydroxylase and dihydrofolate reductase. NADPH, it is dependent, it is a cofactor for these enzymes. So 3 keto acyl, 3 keto acyl
reductase. Then HMG-CoA reductase. So this enzyme is involved in the synthesis of lipids, the synthesis of cholesterol particularly. HMG-CoA reductase enzyme. It is a rate limiting step in the synthesis of cholesterol. म्हणजे काय? And statins जे होते statins, atorvastatin, lovastatin, pravastatin, they inhibit this rate limiting step in the synthesis of cholesterol. ये inhibit करता है, ठीक है? तो इसको वहाँ पे रोल भी दिया है, मतलब यहाँ 3 keto acyl reductase. तो ये एंजाइम किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इट कन्वर्ट 3 keto acyl enzyme to the 3 hydroxy acyl enzyme. HMG-CoA reductase convert hydroxymethyl glutamate to the mevalonate. स्कोलिन इपॉक्सीडेज क्या करता है? स्कोलिन ऑक्साइड बनाता है. कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कोलेस्ट्रॉल को अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप डालता है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल. तो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है? तो आपको मालूम है ये वी हैव सीन इन द synthesis of catecholamides. So phenylalanine is the amino acid, okay, which is hydroxylated and converted into tyrosine. Then again tyrosine is converted into hydroxylation and converted into dopa dihydroxyphenylalanine. Then dopa decarboxylate dopamine. Okay, then alpha methyl hydroxylate that convert dopamine to noradrenaline. And N methyl transferase convert noradrenaline to adrenaline. ये सब आपको मतलब मुंह में आना चाहिए फटाफट कि कौन सा एंजाइम क्या करता है, ठीक है? तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. सो डिफरेंट कोफैक्टर्स एंड देयर ओके इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड. लास्ट ईयर में बहुत सारी चीज नहीं थी. डिफिशियंसी डिसीज एंड टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन B6. सॉरी डिफिशियंसी रिजल्ट इन द पेलेरा niacin vitamin B3 sorry B3. निकोटिनामाइड डिफिशियंसी रिजल्ट इन द पेलेरा. पेलेरा मींस टफ स्किन. स्किन का केराटिनाइजेशन होता है, स्किन टफ होता है, इन्वॉल्विंग द स्किन GIT एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कैन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पेलेग्रा? 4 Ds, 4 D ये सिम्टम्स है. 4 D मतलब क्या? डर्मेटाइटिस है ना, इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस, डायरिया है ना, देन डिमेंशिया. डिमेंशिया मतलब क्या? भूल जाना. डिमेंशिया मतलब भूल जाना. एंड डेथ. यू कैन रिमेंबर डिफिशियंसी ऑफ निकोटिनामाइड, dermatitis, diarrhea, dementia, and death. These are the deficiency symptoms. It is known as a pellagra or anti-pellagra vitamin. Are you getting or not? समझ रहे कि नहीं? Are you getting or not? Next is nothing but the next vitamin जो है that is a pyridoxine. Pyridoxine. Pyridoxine क्या अपन क्या बोलते हैं? विटामिन B6. Pyridoxine is nothing but the vitamin B6. B1 thiamine, B2 riboflavin, B3 niacin. No, B6 is nothing but the pyridoxine. So pyridoxine is nothing but the vitamin B6. is a pyridine derivative. pyridine रिंग का डेरिवेटिव है. So pyridine and इसका विटामिन होता है pyridoxine. It is a primary alcohol. It is a pyridine derivative and pyridoxine is a primary alcohol. Then pyridoxal is a aldehyde. है ना, इससे अपन देखा रेटिनॉल अल्कोहल, रेटिनॉल aldehyde, retinoic acid एसिड. वैसे विटामिन से pyridoxine की. pyridoxine is a alcohol, यहाँ पे primary alcohol है, ठीक है. Pyridoxal is nothing but the aldehyde and pyridoxamine is an amine derivative. So all these three are the vitamins of pyridoxine. Pyridoxine, alcohol, pyridoxal, that is the aldehyde, and pyridoxamine is amine. Recommended daily allowance कितना होता है? 2.2 mg per day. May be increased in the children's and pregnancy lactating women. Source होता है इसका egg yolk, fish, meat and milk. गेहूं में पाया जाता है corn, cabbage, रूट्स एंड ट्यूबर्स. ये सब आता है. बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ दिस pyridoxine. अगेन जो मैंने बोला ये सब क्या है? इसके सब कोएंजाइम निकलते हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स वाले. pyridoxal phosphate is a coenzyme. pyridoxal phosphate is a coenzyme which precipitate reaction like transamination, decarboxylation, deamination, transsulfuration and condensation reaction. तो ये कोफैक्टर है जो enzymes लगते हैं. enzyme responsible for the decarboxylation, transamination, deamination, transsulfuration and condensation. तो ये इनके लिए जो reactions होते हैं इसमें ये कोफैक्टर है pyridoxal pyrophosphate. Above reactions are involved in the synthesis of biogenic amines. These reactions are involved in the biogenesis of amines. Pyridoxine antagonist कौन होता है? Isoniazide. So what is isoniazide? Isoniazide is nothing but the is a drug used in the tuberculosis.
आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, इसका केमिकल नाम होता है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, आईएनएच बोलते हैं इसको, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, है ना, आइसोनियाजाइड. सो इट इज अ फर्स्ट लाइन एजेंट यूज्ड इन द tuberculosis. Now it causes the peripheral neuropathy. क्यों करता है peripheral neuropathy? उसका एडवर्स इफेक्ट होता है. ऑलरेडी ये अपन टीबी जब देंगे तब देखिए, बट अभी बोल तो आइसोनियाजाइड एज एडवर्स इफेक्ट peripheral neuropathy. Why? It depletes the pyridoxine. Pyridoxine antagonist होता है. That's why. So deoxypyridoxine is also again antagonist and methoxypyridoxine is also pyridoxine antagonist. तीन एंटागोनिस्ट याद रखो, आइसोनियाजाइड, डीऑक्सीपाइरिडोक्सिन, मेथॉक्सीपाइरिडोक्सिन. आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है या नहीं? स्ट्रक्चर याद रखो पाइरिडोक्सिन का, पिरिडीन, पाइरिडोक्सिन, पाइरिडोक्सिन, पिरिडीन रिंग रहा है. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द deficiency of this pyridoxine, deficiency of this pyridoxine and toxicity. Deficient toxicity तो होता नहीं इनका, because all these are the water soluble vitamin, they are easily excreted from the urine. That's why toxicity doesn't occur. Now deficiency is associated with the neurological symptoms like depression, irritability, nervousness, mental confusion. Neurological symptoms आएंगे इसका deficiency. माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रो मतलब क्या? कम, साइटिक मतलब क्या? सेल, सेल कम हो रहा मतलब क्या? सेल नहीं कम हो रहा, सेल का साइज कम हो रहा. सो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, रिड्यूस्ड हीम प्रोडक्शन एंड एसोसिएटेड विद द विटामिन B6 डेफिशिएंसी. अगर विटामिन B6 दैट इज अ pyridoxine का डेफिशिएंसी अगर वो है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है. Induced B6 deficiency, isoniazid causes the depletion, penicillamine also decreases the B6. Now this is known as a pyridoxine. नेक्स्ट विटामिन होता है आपका बायोटिन. तो आई थिंक बाकी मुझे मुझे लगता है कि और 2-3 लेक्चर लगेंगे इसके लिए. आपका कल बायोटिन, विटामिन B12, वो बहुत सारा है आगे भी. सो आई थिंक विल टेक रिमेनिंग पॉइंट टुमारो. इज इट ओके?